Hi guys, welcome back to my channel. Myself Ayush Bhatnagar, and today I am going to share with you my IIT Jodhpur MBA interview experience. So the School of Management and Entrepreneurship at IIT Jodhpur is the only IIT that provides tech-based MBA in India. So let's begin. So if you are new here, then please subscribe to my channel for more interview updates. So my interview slot was at 10 a.m. and I had to wait around 1.5 hours, and finally around 11:30 my interview started. So there are two panelists, one is male, one is female. So the first question that male panelist asked me is that tell me something about yourself, introduce yourself. So I give a brief introduction about myself of around 52 to 60 seconds. Then the second question that he asked me about my gap year. So I give reasons that why I took gap year and why I switched from my GATE preparation to CAT preparation. So he was quite satisfied with my answer. Then he asked me that Ayush, what do you think that what are the restrictions in public sector jobs in GATE mechanical engineering? So I give three reasons, and again he was quite seems to be satisfied with my answer. So the next question that he asked me that what do you think, what are the reasons of less job hiring in PSUs through GATE in mechanical engineering? So मैंने उन्हें आंसर किया कि सर जब when I was preparing for GATE in GATE 2023 I secured all India rank of 2512. मेरे को IIT से कुछ MTechs के ऑफर थे, बट मेरा जो एस्पिरेशन था मेरे को पब्लिक सेक्टर जॉब्स में जाना था. सो रेस्ट्रिक्शंस ये थी कि पब्लिक सेक्टर जॉब्स में एक तो ऑटोमेशन ज़्यादा आ रहा है एंड गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल नहीं रही है, गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रही है, वैकेंसीज आती भी हैं तो वो ना के बराबर आती हैं, स्पेशली इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो महारत्ना, मिनी रत्ना, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स PSUs हैं वो सभी बहुत कम वैकेंसी हायर कर रहे हैं काफ़ी टाइम से आफ्टर कोविड. तो आई डोंट वांट टू वेस्ट वन मोर ईयर इन दैट, and being practical at that point I think that CAT is the best option for me to opt. Also I am very much interested in leadership and management roles because during my graduation I had done 3 internships at prestigious organization at ONGC, ISRO and JK Tires and Industry. So there I learned about the technical part, but I am unable to understand how business works behind the technical part in that organization. सो मैंने उन्हें ये रीज़न दिया, सो वो सेटिस्फाई लग रहे थे इससे, एंड मैंने यही बोला कि सर वहाँ से मेरे को एस्पिरेशन आई कि आई शुड गो फॉर MBA. सो दैट इज़ द बेस्ट कॉल फॉर मी एट दैट टाइम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीम लीडर क्वालिटीज एंड एक्सप्लेन मी विद सम एग्जाम्पल्स. सो आई टोल्ड हिम दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीम लीडर इज दैट ही और शी शुड बी अ गुड लिसनर, एंड आई गिव एग्जाम्पल ऑफ our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and in the world of startup I give example of Ashni Grover and Vinita Singh. So the next question that he asked me that what do you think sugar cosmetics is a profitable business or it is in loss? So I told him that sir, at present currently it is in profit, but last year it was in loss. So that's all about my IIT Jodhpur interview experience. मेरे को एकेडमिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं उन लोगों ने. तो मेरा पूरा इंटरव्यू, मेरा गैप ईयर, वाई MBA, टीम लीडर क्वालिटीज़ एंड मेरा जस्टिफिकेशन क्या है गैप ईयर का, इस पे गया है पूरा. ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं था, इट वेंट अराउंड 8 to 10 minutes आई थिंक, एंड इट वॉज इन ऑनलाइन मोड ऑन गूगल मीट. सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and I will come up with more interview experience in upcoming days. So thanks a lot for watching. Thank you.